Ladies and gentlemen, just like colloquially, you must have heard of the phrase that the way to a man's heart is through his stomach. When it comes to political science, the way to reach the soul of the Maratha voter is clearly through Chhatrapati Shivaji Maharaj. And it's not surprising because the 17th century Maratha warrior who changed the course of history is all set to change the political landscape in battleground Maharashtra. It all started a week ago with the 35 feet Shivaji statue, which was inaugurated by the Prime Minister last year on Navy Day, collapsed in the Konkan region. Since then, we've seen a war of words between the Maha Vikas Aghadi, which has made Maharaj a mission to oust the Mahayuti from the state. Today, as the Prime Minister visited the state to lay the foundation stone for India's largest deep water port, the Congress leaders took to the street demanding an apology for the collapse. Several posters demanding an apology from the Prime Minister were put up by the Congress party at various locations. And then came the much-awaited apology. In Maharashtra's Palghar, the Prime Minister said what the opposition wanted to hear. He said that Shivaji is not just a name, but a deity. Listen in to what the Prime Minister said. इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने कर रहा हूं। The Prime Minister's apology comes at a time when the Chief Minister has also blamed the winds and the Navy for the collapse, and ally Ajit Pawar has vowed action against the culprits. He has also staged protests across the state and has visited the crash site to condemn the collapse of the statue. But this seems to be a metaphor for how things are tumbling down in the Mahayuti when it comes to spirits and when it comes to unity. A remark made by Shiv Sena leader Tanaji Sawant has really set the cat amongst the pigeons. He has said that he feels nauseous and wants to vomit every time he sits next to Ajit Pawar and his NCP colleagues in cabinet meetings. He has also asserted that both parties have different ideologies and can never agree to their terms. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ही वास्तव जसं एनर्जी म्हणतोय गुढी खाली उलट्यावर चालू ती अवस्था आहे. कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे. जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आलं ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही. ते आता 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही. जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे आता असं कर बापानं थोडं जम दिला की नीट झाला होत नाही ते लक्षात. त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत. His remark expectedly has drawn sharp criticism from the NCP Ajit Pawar faction, indirectly reminding the Shiv Sena about coalition dharma. Ajit faction has asked the Chief Minister to take a serious note of this issue and get him the right medical treatment for his condition. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी नहीं, उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है, एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजीत दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। And this, of course, has given the opposition only more fodder for ammunition. The Maha Vikas Aghadi is saying that it's just the tip of the iceberg and that the Mahayuti unity will crumble just like the statue of Shivaji did ahead of the state assembly elections. हिंदी फिल्मों का मशहूर गाना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हो महायुति सरकार की कलह सामने आ रही है, अभी तो बहुत खींचातानी बाकी है, अभी तो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना, अजीत दादा पवार की कथित राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी में अभी बहुत मनमुटाव बाकी है।
सिर फुटबॉल बाकी है, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, सेवा के लिए नहीं। जो सत्ता के लिए आता है ना, वो अपना फायदा देखता है। ये आपस में तीनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियां कर रहे हैं ना, अभी तो बात केवल उल्टी तक आई है, अभी तो इनकी चीर फाड़ ऑपरेशन सब बाकी है। अब बताइए अजीत दादा पवार के हाथ क्या लग रहा है? अजीत दादा पवार के खिलाफ कभी आरएसएस बोल रही है, कभी आरएसएस का मुखपत्र बोल रहा है, कभी एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के मंत्री बोल रहे हैं, कभी तानाजी सावंत, कभी कोई और। तो अजीत दादा पवार, आपको सोचना चाहिए। देखो, ये हमने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र की महायुति की भ्रष्ट जो सरकार है, इनमें महाभारत चल रहा है और ये महाभारत सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हम जब बात करते तो हम आरोप लगाते हैं, ऐसा आपके मीडिया के माध्यम से वस्तुस्थिति हमने रखी है। तो बहुत सारी घटनाएं आगे आगे होने वाली है। भुजबल एक तरफ रहते, उनका आधा मंत्रिमंडल एक तरफ रहता है, तो वो भी चल रहा है। तो ये देखिए अब क्या क्या होता है, लेकिन महाराष्ट्र की प्रतिमा मलिन करने का जो पाप जो बीजेपी और उनके साथी लोग कर रहे हैं, वो कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। The question is, will the Mahayuti win the upcoming Mahasangram, or will the Maharaj and his legacy dent Modi's Maharashtra mission? I'm asking these questions to my guest joining me, Abhishek Mishra, spokesperson of the BJP, B.D. Singh, spokesperson of the Shiv Sena Shinde faction, Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena UBT faction, and Rakesh Shetty, spokesperson of the Congress. Thank you all, gentlemen, for joining me. Let me start with B.D. Singh. Sir, simple सवाल है, Why is your party, आप लोग ऐसे पार्टी के साथ क्यों गठबंधन में है और उसके साथ क्यों इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं जिसके साथ गठबंधन में होने की वजह से आप ही के पार्टी लोगों को उल्टी आ रही है? ऐसा उल्टी का सवाल नहीं है। पार्टी में एकता है, महायुति की तरह से सशक्त है और जिस तरह से कल्याण में तो आमदार ने गोली मारा है, गणपत गायक नहीं, एक से ये सवाल बीडी सिंह जी के लिए। तो पार्टी पूरी तरह से सशक्त है और जो शिवाजी पुतले की बात है, तो उसके लिए जो उसका शिल्पकार है, जो चेतन पाटिल जी जो है, जो शिल्पकार है, उनको अरेस्ट कर दिया गया है और उसके लिए समिति बनाई गई है। उसके लिए अपना थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि क्या है कि विदाउट उसका इन्वेस्टिगेशन किसी के प्रति जो है अपना एक्शन नहीं ले सकते हैं। और सरकार में पूरी सशक्त है, सरकार में कोई भी गठबंधन में कोई भी इश्यू नहीं है। महायुति क्या बोल रहे हो बीडी सिंह जी? महायुति कोई अलायंस नहीं है, मैं सब सही है, सभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमेंट्स पढ़ूं जो पहले आपके उसमें हुआ था, जिसमें आप ही के लीडर, इट्स नॉट जस्ट बिटवीन अजीत पवार फैक्शन एंड बिटवीन एनसीपी, बिटवीन शिवसेना, आप ही के लीडर्स में रामदास चौहान साथ जो झगड़ा हुआ था, किसी ने बोला था मुंह तोड़ दूंगा, किसी ने गद्दार बोल दिया था। इस टाइप के स्टेटमेंट्स आ रहे आपके अलायंस से, आप कैसे बोल सकते हैं? अभिषेक मिश्रा, स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी, द फैक्ट इज दैट व्हाट द बीजेपी has achieved in the last 10 years is that it creates unnatural alliances both in the opposition when it comes to formation of Mahagathbandhans against the BJP, as well as unnatural alliances within the BJP here. And I don't blame honestly Mr. coming up with that statement here, because constitutionally a Shiv Sainik is trained to hate an NCP worker, and then to think that, you know, Shiv Sainiks are being made to sit with NCP leaders, made to fight elections, made to seek votes in each other's name. How is this sustainable? See, you have to understand a basic fact that the alliance, the top three leaders are Devendra Fadnavis ji, Eknath Shinde ji, Ajit Pawar ji. They are the leaders who decide the policy of the alliance. All three leaders, top leaders, are united. They are attending government functions together. We are showcasing our development, whatever we have done for people of Maharashtra together. All our party office bearers are having meetings together. The workers are having meetings together. There is cohesion. We are focused on serving the people of Maharashtra, ensuring development, and that our alliance gets blessing of people of Maharashtra. And so if one leader of the Shiv Sena party, Eknath Shinde ji, has given a statement, though he may be minister, but he is still not the top leader. Top leader is
Shindeji. Eknath Shindeji's statements are what BJP can respond to. He is the top leader of the alliance. He is the chief minister of the state. If Tanaji Sawant has made a statement, it is up to Eknath Shindeji. Even the Shiv Sena constitution, it is the chief leader of the party, that is Eknath Shindeji right now, who has to decide if within party somebody makes a statement which goes against the party line. But will you not concede, Kishore Tiwari? Ultimately, politics is about perception. Leader of Shiv Sena Politics is about perception. And when these statements come out from senior leaders, Tanaji Sawant ultimately is also a vote catcher. No, but does it not affect the voters? I mean, if I am a voter in Maharashtra and my own my minister is asking me, is openly telling me that his ally is someone who makes him puke, what confidence does that provide me to vote for the NCP? In their bank account, 3,000 for 2 months. So the people of Maharashtra see that the alliance is working for development. If the alliance is strong, the top leaders are strong. Now, you have to understand, though it's an alliance, there are 3 different political parties. And a political party, within a political party, some leader may have a contrary view. But it's the duty of the top leader of that political party to ensure that such things do not have that things are sorted out in between. So Eknath Shindeji will definitely ensure that Tanaji, whatever grievance here it is solved, but it does not affect the alliance as a whole. Alliance is strong. That's what I'm repeating once again for the people of India. Okay. Alliance is strong. Our top leaders, Devenji, Ajit Pawarji, Eknath Shindeji, they are doing rallies together. They are doing. So as long as the top leaders are they are saying doing photo ops, as long as the top leaders are doing photo ops, all is well in the alliance. That's the message coming in. Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena UBT faction. The Uddhav Balthak with government programs. Okay, one second, Abhishek ji. One second, Abhishek ji. You've had your say. Let me go to Kishore Tiwari. No, one second. No, it doesn't work. The state is showcasing government program, welfare of the people. How is a photo op? It's not a photo op. You have to serve the people of Maharashtra. Very good. I think you are okay, Kishore Tiwari. Biased. You are biased. Let me. Thank you very much. I mean, if that is your opening, if in the first argument you have to come back to accusing the anchor of being biased, then we understand the lack of substance of your arguments. But nevertheless, Kishore Tiwari ji, one can ask that, the Shiv Sena UBT has been gloating a lot over these comments that are coming in from the Maha Youth Alliance at this point. I can turn around and ask a similar question. If at the end of the day, Uddhav Thackeray's Shiv Sena coexists with the Congress party, can coexist with the NCP for a period of almost 5 years, after having fought them for decades, why can't the Shiv Sena or Eknath Shinde coexist with Ajit Pawar? At the end of the day, it's an unnatural alliance even on your side. At the end of the day, even your side has Shiv Senics who have to fight with NCP workers and have to seek votes in the name of NCP leaders. If the Maha Vikas Aghadi could survive for 5 years, why are we asking these questions to the Maha Yuti Alliance? Maha Vikas Aghadi was toppled after 2.5 years, and Maha Yuti of this unnatural alliance is existing for the last 2 years. But if you look at the comments, क्या कहते हैं तानाजी सावंत, मी त्यांच्याजवळ बसतो तर मला उलट्या होतात, मला नौशिया होतो, अशा भ्रष्ट लोकांसोबत मी बसू शकत नाही. I am surprised, and remark the NCP spokesperson of Ajit Pawar group, he says he requires treatment. He is eating too much of money because there is a charge in an ambulance purchase. This man has literally loot Maharashtra by 4,000 rupees. So it is unfortunate. Maharashtra Manus is looking at the thing, and I was surprised to see the Abhishek Mishra was saying that everything is okay, and 3 leaders are showcasing what they are showcasing. Bhattacharya, you are showing that the Shivaji Maharaj का अपमान. और क्या चल रहा है ये? महाराष्ट्र में लूट खरोच चल रही है. नहीं, तिवारी, मिस्टर तिवारी,
एक साथ कर कह रहा हूं। मिस्टर तिवारी, बोलिए बोलिए। तिवारी, मेरा नाम रितांशु है। माय सिंपल सवाल है, देखिए, इतना ही अगर महा अघाड़ी में इतने सब चीज सही है, आप बताइए आपका चीफ मिनिस्टर फेस कौन है? शरद पवार जी है कि विजय वडेट्टीवार जी है कि उद्धव जी है? आपने वोट डिसाइड किया है? एटलीस्ट उनके तरफ से तो क्लियर है चीफ मिनिस्टर कौन है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? एक बात बताऊं तुमको, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है और वो फाइनल है। और मैं आपकी नॉलेज अपडेट कर देता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है कि अगले मिनिस्टर उद्धव ठाकरे रहेंगे और हमारे उम्मीदवार उद्धव ठाकरे है। ये बात मैं कबूल करता हूं कि लोकसभा के चुनाव अभी उसका किशोर जी अभी उसका टेस्ट लेते हैं। किशोर जी अभी उसका टेस्ट लेते हैं। राकेश शेट्टी जी, योर स्पोक्सपर्सन ऑन द कांग्रेस, आर यू थिंक द कांग्रेस पार्टी इज सपोर्टिंग उद्धव ठाकरे एज चीफ मिनिस्टर फेस? एक सेकंड, अभी बता लेते हैं, अभी दिख लेते हैं। राकेश शेट्टी जी, इज द कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली सेइंग दैट यस मिस्टर उद्धव ठाकरे इज अ चीफ मिनिस्टर? Because Kishore Tiwari ji has said that the Aghadi alliance is going to make Uddhav Thackeray the chief minister. Mr. Bhattacharya, you are a senior journalist, you are an editor. You very well know, and you have been covering Congress since last so many years. From 1999 to 2004, 2009, 2014, Congress party doesn't have a culture to announce its chief minister candidate. And you are very well aware that Uddhav Thackeray ji has come out and openly said that Mahavikas Aghadi is not going to put up a CM face right now. We are very much clear that election will be on our side. You have seen the Lok Sabha election, 48 seats. We managed to get 31 seats, and now once the MLAs are elected, MLAs are going to choose the chief minister. This is what the constitution says, and this is what Bharatiya Janata Party has done in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. I agree, Rakesh Shetty ji, I agree. I had a simple test and that got fulfilled. Kishore, you say that the entire alliance, including Mr. Uddhav Thackeray, decided that they will fight the election without announcing a chief minister face. But uske pehle we heard Kishore sir saying that Uddhav ji will be chief minister. Why? So contradiction dikh raha hai. But Rakesh Shetty, let me now come to the entire one second. This is a subplot. This is a subplot. Let me come to the meat of the matter. Rakesh ji, I'm coming to you only. Let me come to the meat of the matter. Ask the question, then you can give your answer. The meat of the matter is today the Prime Minister's apology. And the Prime Minister said that, the opposition has no right to lecture us about insulting icons. Because unlike them, we don't go back on Congress on leaders who we have once venerated. The idea being, the implication being how the Shiv Sena UBT faction has tolerated insults of Veer Savarkar. To the BJP, if there's someone, if their icon like Chhatrapati Maharaj has been insulted, we will fall at your feet and ask for their apology 10 times over. So at least the Prime Minister is acknowledging there is galti ho chuki hai. But that's not the case when it comes to the Mahaghadi. Rakesh Shetty ji, how will you respond? And I'll go back to Kishore Tiwari ji. Now, Kishore Tiwari ji proposed Uddhav Thackeray ji's name. Let me just clarify that Uddhav Thackeray as chief minister in the 2.5 years had done a very fabulous job. Even the people of Maharashtra like the way he handled COVID situation. Even the High Court and the Supreme Court applauded how Uddhav Thackeray ji has handled the COVID situation. Coming to your question, Prime Minister Narendra Modi to apologize, but it's too late because people have seen the drama. Ajit Pawar apologized, but Eknath Shinde and Devendra Fadnavis both put the blame towards the Navy. And 2 persons were arrested. You very well know that architect Chetan Patil and Jaideep Apte. Chetan Patil directly accused, said, I have not designed it. Every work was given to a contractor from Thane. You very well know Eknath Shinde resides in Thane and his son Shrikant Shinde. His friend was a contractor for this project and it is too late. 4 days have passed. People
of Maharashtra will not accept this apology, because we have seen the drama what Narayan Rane did in front of the statue. He is threatening Aditya Thackeray, everyone who is going and criticizing the government. We are in opposition. We have every right to oppose it. And if the government is failing to do their job, we are going to oppose. You can't threaten us. You can't tell us their consequences. And Maharashtra. So Rakesh Shetty, you are saying people of Maharashtra will not accept. Rakesh Shetty, you are saying us people of Maharashtra will not accept the insult to Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kishore Tiwari ji, will the people of Maharashtra accept the insults to Mr. Veer Savarkar, which has been done by which according to the BJP has been done by Rahul Gandhi and other Congress leaders who are your ally both in Maharashtra and at the center? We are with the Congress with the very common minimum program. Savarkar and Hindu are not part to it. We feel हमारे आराध्य देव है शिवाजी महाराज, हमारे आराध्य देव है वीर सावरकर, और सावरकर का अपमान हम कहेंगे नहीं। दूसरा, मैं शेट्टी साहब को ये भी बता देता हूँ, अगर महाराष्ट्र के अंदर हम उद्धव जी को नेता बोलकर सामने रखते नहीं है और जिसके विधायक ज्यादा उसका ये सब रखते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि लोग महायुति को परास्त करने के लिए पर्याय बोल के चुनेंगे। तो मैं बहुत बीजेपी के अनुभव से आया हुआ आदमी हूं। हमें हमारा नेता पहले डिक्लेयर करना चाहिए, और हम तो कह रहे हैं अगर उद्धव जी को सीएम शिप की उम्मीदवार नहीं रखते तो हम हमारी बात तय करेंगे ना, हम भी जनता में जाएंगे। हाँ, कोई कहता है कि हमें लोकसभा में बहुत सीटें मिली है, कमाल किशोर तिवारी जी, वो जाएंगे वो उनको this debate began over disagreements in the Mahayuti alliance. This debate began over disagreements in the Mahayuti alliance, और सामने डिबेट में लाई महाअघाड़ी अलायंस में भी बात आ गई है। मजे की बात तो ये है। एनीवे, बीडी सिंह जी, लेट मी कम बैक टू यू। जितने आप बोले कि अघाड़ी में क्रैक्स है, अननेचुरल से जितना है, बात परफॉर्मेंस की बात आती है तो 31 आउट ऑफ 48 जीत चुकी है अघाड़ी लोकसभा इलेक्शंस में। 32 अलायंस की इस समय सिचुएशन इतनी खराब है कि लोग बोल रहे इसलिए। अच्छा ठीक है, 32 किशोर जी, सॉरी, बिकॉज लेट्स बी आई अक्यूज्ड ऑफ बीइंग बायस्ड अगेन वंस अगेन बाय मिस्टर अभिषेक मिश्रा। एनीवे, बीडी सिंह जी, 32 आउट ऑफ 40 स्ट्राइक रेट रहा है महाअघाड़ी का। परफॉर्मेंस बोलता है लोकसभा इलेक्शन में, लोग कहते हैं महायुति अलायंस इतनी डरी हुई है कि महाराष्ट्र में चुनावी जो 20 साल में पहली महाराष्ट्र की चुनावी हरियाणा के साथ डिक्लेयर नहीं हुआ है। 20 साल में हमेशा महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव डेट्स एक साथ आते हैं, इस बार डिक्लेयर ही नहीं हुई है क्योंकि महायुति इतनी डरी हुई है। एंड इट इज ऑल बीइंग सिंबलाइज्ड बाय जो ड्रामा चल रहा है शिवाजी स्टैचू के गिरने के बाद। एट परफॉर्मेंस अगर बोलता है तो क्लियरली आप लोग तो बैकफुट पर हो। बीडी सिंह जी, जी, आपके 3 सवाल हैं, मैं तीनों के अलग अलग जवाब देता हूँ। पहला तो ये कि जो तिवारी जी बोल रहे थे कि जो है उद्धव साहब बनेंगे चीफ मिनिस्टर, जो है तिवारी जी को शायद कुछ उसमें गलती हो रही है। एक्चुअली जब भी मीटिंग हुई थी महाविकास अघाड़ी की जो है, तो उसमें क्लियर बोला गया था कि उद्धव साहब खुद बोले थे कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो उस अभी जो सर्वे बता रहा है महाविकास में, उसमें तो कांग्रेस की सीट ज्यादा बता रही है, तो उसमें उद्धव जी का तो कोई भी चांस दिखता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो तिवारी जी समझे, वो उनका पर्सनल मामला है। दूसरी चीज, आप जो लोकसभा इलेक्शन का बता रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन का मुझे दूसरे से लेना देना नहीं है कि क्या है, लेकिन जो है जो माननीय शिंदे साहब हैं, इन्होंने कम पीरियड में जो गेन किया है, परसेंटेज वाइज वो देखेंगे तो शिवसेना जो उद्धव है उनका परसेंटेज देखेंगे तो जो सीट के अगेंस्ट में उन्होंने 41% कुछ गेन किया है सीट को, जो है एमपी के लिए। और इसमें अगर इनका देखेंगे शिंदे साहब का, तो इन्होंने 43 पॉइंट समथिंग परसेंटेज गेन किया है, और बहुत कम टाइम में, और उसके और भी सीटें आती थी। उसका रीजन ये है कि ये आप पार्टी टू पार्टी का स्ट्राइक रेट बोल रहे हैं ना,
अलायंस टू अलायंस का स्ट्राइक रेट बोलिए, अगर मैं अजीत पवार जी का स्ट्राइक रेट बोलो तो और गिर जाएगा। पवार जी का थोड़ा कम है, लेकिन जो है हम तो जिसके लिए हम उनके प्रवक्ता बताएंगे तांसु जी, मैं तो जो है माननीय सिंधिया के प्रवक्ता है। वही तो हो रहा है। What we are seeing in Maharashtra is a very khichdi political situation at this point. 2 Shiv Senas, 2 NCPs, 6 parties here, every party targeting each other. It's the most khichdi election campaign I've ever seen. Abhishek Mishra, one last question, because in the midst of all this khichdi, the Prime Minister has gotten involved. I have not seen the Prime Minister issue an apology a lot of times in his 20-plus year career. The fact that today he has had to apologize, does this mean that the BJP especially, and if not the alliance itself, is on a back foot today in Maharashtra? No. It's a sign of humility by the Prime Minister. As a Prime Minister of the country, he understands the seriousness. Chhatrapati Shivaji Maharaj is the deity of Maharashtra. Everybody, they all look up to him. They learn from him. They follow his life as an ideal of life. So when Chhatrapati Shivaji Maharaj's statue fell, it pained every man in India, every human being in India, every citizen of India. And Prime Minister Modi expressed that sorrow, that it is a mistake. And he himself apologized as the Prime Minister of the country, that Chhatrapati Shivaji Maharaj's statue fell. It's a shame for us. And we should rectify. And what official action, criminal action by police has been taken. But Prime Minister took responsibility and said this is such a sad fact, sad incident. That I as Prime Minister take responsibility and apologize to the people. This should not have happened. Okay, so I'm running over this debate. I just wanted to get your answer on that, which you've given me. And one has to give it to the Prime Minister. If he is to take credit when the statue is unveiled on Navy Day, he's also there to take responsibility and apologize for when the statue comes falling down. It's not just about the statue. It's what about the statue represents. It's about the state of Maharashtra politics here. It's going to be a very fascinating several months till we find out what the verdict actually is. Abhishek Mishra, VD Singh, Kishore Tiwari, and Rakesh Shetty, thank you so much for joining us on this debate. We are heading into a short break. On the other side, we've got a very important debate in terms of corporate tax versus personal tax collections in India. Stay tuned. As a leader, you need to look at the big picture. Oh, I do, boss. Every day. The XUV